This is the third lecture video of PYQ Parishram. Chapter is learning. So let's start with the most peripheral topic. In 2018, question was asked regarding probability learning, and it was not direct. It asked about the relationship between the probability learning and other learning, and the relationship is difference. How this PL probability learning is different from other types of learning. So we'll give examples in a 10 marker. So in this answer, I simply give you the content. Very unstructured, because there's a content deficit here, because nobody has the quite appropriate content. So I just compiled the content here. Don't worry, I will also give you the answer also. This video only. So first I defined it. What is it? And I gave some example. Hota kya hai? And then some empirical evidence. Again, some examples from animal studies. Then behavioral strategies. Then the research work 1, this is the research work 2, and these are the features. And there's the application, the aspect. There's another, again, explanations of the concept. This is the strength, limitation. So that's all. So this is the basically, this will serve you a good content material for probability learning. And now coming to the answer of this question, how it is different from other types of learning, give examples. So if we are going to structure it, we use this. This is the definition, this is the example, and then directly go to the question, what is asked. So I simply pen it down, just keep on writing here. I move the screen slowly. First aspect is, what are the key factors in classical conditioning? Its association between stimulus 1 and stimulus 2, condition, unconditioned and conditioned stimulus. In operant conditioning, it's the consequence, means reinforcement or punishment, which allows you to learn something. In observation learning, it's observation. In probability learning, it's probability information. What event is occurring at what rate? You can say this is probabilistic information. And second aspect, this is data-driven learning, processed and analyzed by the cognitive faculties. ऐसा नहीं कि एक सिंगल इवेंट से आप कुछ जनरलाइज कर पाओगे. You need the series of trials to generalize something. कि what is the probability of occurrence of this event in this situation. You cannot generalize or formulate in lab-based experiments, because in labs we need to predict, we need to control things, but this is here it is not possible, because that's why probability comes into the play. So in classical conditioning, a single trial learning is possible. For example, taste aversion. यहाँ पर possible नहीं है, not possible. More of an idiographic approach, unique, individual focused. For example, for me, the probability of occurrence could be different because of my cognitive processing is such. For someone, it might be different. But other learning theories are more typical behaviorist theories of learning, are more law-driven, theory-based. So see, this is the one of the key debates in psychology. So अगर आपको सिलेबस का मोटा मोटा आइडिया होता है तो आप ऐसे उसको अपने आंसर में यूज कर पाते हैं. This is more free will, or you can say cognitive deterministic. Other learning theories are environmental deterministic, कि environment determine करेगा आप कैसे learn करोगे. But यहाँ
You have to put your mind into the to get the probability, get the trend. In other type of learnings, elements of stimuli doesn't serve as a discrimination cue. For example, that sound of a bell in classical conditioning, the sound of the bell उसमें उसकी tone कैसी थी, pitch कैसी थी, it was not considered. But here, probability learning में, for example, a yellow light as a stimulus, तो कितना yellow है, वो भी probability का एक aspect serve करता है. तो it is also a discriminative view. इसका बहुत ह्यूरिस्टिक इम्पैक्ट होता है प्रोबेबिलिटी लर्निंग. हम अपनी लाइफ में आई थिंक मैक्सिमम यही यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी एनालाइज PYQ एंड सी व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जांपल, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की लर्निंग का क्वेश्चन और मेमोरी का क्वेश्चन एक साथ आता है हर तीसरे साल. सो दिस इज आवर ट्रेंड, दिस इज आवर एनालिसिस, एंड वी हैव यूज स्ट्रेटजी ऑफ एयर. There are two strategies in probability learning. One is uh, maximization and probability outcome. This is the what is the most probable outcome after analyzing. So we utilize here this probability outcome only. Then coming is the randomization of samples. अगर बार-बार single every time there is a fixed schedule of reinforcement कि हर बार reward मिल रहा है. It's there's no need to go for probability learning जब हर बार मिल ही रहा है तो it should be variable both in ratio and in time. You don't know when you get. But it means real life situation. You will get that. So these are 8, 9 different points you can write. And in conclusion, you go for the recent trends. So machine learning here, what is that? It is only probability learning which focuses on the trend analysis and the code prediction with the help of different algorithms and computational techniques. So this is the way to write answer. You need to conclude with the recent trends. If the recent trend in learning, machine learning, you should write it down. Hope you understand this answer. And, moving further, see the next answer. Here also question is a bit unstructured, but content-wise it's complete. Content is totally, there's no need to visit anything else. The question of 2022 learning not only refers to conditioning but also from observation. So ये तो सिंपल सी बात है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे क्वेश्चन आया है. डिस्कस द स्टेटमेंट फॉर द चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू. चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि हम एग्जांपल बच्चों वाले देंगे. और बच्चों वाले एग्जांपल्स आई वांट टू से कि चाइल्ड फोकस्ड, नॉट बच्चों वाले मतलब सस्ते वाले में देंगे. मतलब यू कैन अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश. सो वी गिव एग्जांपल्स ऑफ चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश मीन्स. एंड clearly asking the pros and cons of observation learning for children. So तीन पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस आंसर को कि पहले ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे. This is the broad structure. So what I started here with, I gave the intro as per the context. चाइल्ड फोकस था तो हमने चिल्ड्रन पे भी फोकस किया. चाइल्ड कैसे ऑप्ट करता है, ऐसे उठना बैठना, ये सब कैसे मॉडलिंग करता है, कैसे वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट करते हैं उसको. मैंने कम टू द स्टेजेस. स्टेजेस क्या थे, जो बंडूरा की थ्योरी थी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन. मैंने मेंशन अटेंशन, इनिशिएशन, मोटिवेशन. देन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया. लेकिन जैसे 20 मार्क का क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सप्लेन की बंडूरा ने क्या किया था. फिर उसके फ्यूचर एडप्टेशन स्टडी आई थी जिसने वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट के बारे में बताया था. Then you should come to example. This is the example. इन्फेंट कैसे लर्न करता है, कैसे चू करना सीखता है. मतलब एग्जाम्पल बेस्ड ऑन चिल्ड्रन लाइफ. मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के डिफरेंट जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. दिस इज वे ऑफ थिंकिंग. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के स्टेजेस विल थिंक एंड देन आई राइट द आंसर. इट इज अ वेरी गुड पॉइंट आई फाइंड समवेयर दैट इट इज अ केस स्टडी. सम इंडिजिनस कम्युनिटी ट्राइब्स जो है, they
ऑब्जर्वेशन लर्निंग को बहुत हाईली वैल्यू करते हैं मेरी सोसाइटी में बिकॉज इट इज द बेस्ट वे टू inculcate a children into society. So you should mention it. It's very good. And Mayan tribe and African American Indian tribes they follow this approach of learning in their real life. And now coming to here pros and cons वाला aspect शुरू हो गया. Starting with the cons, you can start with the cons. पहला तो aggression का और violent games का जो aspect है इसमें सीधी सीधी बुशमैन और दिस इज वेरी फाइनल स्टडी इसको हमेशा याद रखना और तब बहुत ज़्यादा काम आ जाती है. So this is the final study of Bushman and Anderson. They found out कि violent games या videos के exposure से aggressive tendencies बढ़ जाती हैं. It was the one con of observation learning. Second, poor role models जो होते हैं वो demonstrate करते हैं poor behavior. So this was also shown by Mandira कि parents abusive हैं तो बच्चे भी abusive हो जाते हैं. Undesirable models may reinforce the behavior. The homicide rates after media events like television Hollywood champions तो उससे भी चीजें नेगेटिवली परसू करते हैं चिल्ड्रन आफ्टर ऑब्जर्विंग देम. और एविडेंस भी हमेशा विजिबल नहीं होता पता नहीं मतलब कि वो दे आर व्हाट एस्पेक्ट दे आर ऑब्जर्विंग. सो दिस इज आल्सो अ फैक्ट. और मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो इट्स नॉट ऑलवेज कि वी we learn from our role model always because it's need motivation component. Then pro aspect, pro social models का. So Sprackfin की study है. Just read it very simple. You will come to know what is that. Learning news इसमें काम आ जाती है. Reinforcing में काम आती है. Negative behavior को कम करने में काम आती है. बच्चों के लिए सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव होते हैं. बड़ों से देख के सीखते कि हाउ टू से हेलो नमस्ते एंड ऑल. ओवरऑल बिहेवियर को इंप्रूव करती है. enhance memory जो various memory enhancing tricks है when teacher teach them and when they observe they come to know कि this is the way to learn things. Mannerism को influence करते हैं. Expand knowledge. So these are very simple parts but you can write it to add dimensions to your answers. This is very good case study for the conclusion. It's a study in the Mexico. They were running a literacy campaign. Initially, they don't have any very few subscription for that. Then they went for a soap opera, taking the big positive role models, and after that, people start coming to collect their books. Around 25,000 people take the courses just after the day of that soap opera. So you can conclude with the India, Africa और various countries में mass media campaigns बहुत use होते हैं जिसका basic फंडा observation learning ही है. So this is the way you approach your answer. Conclude case study होनी चाहिए. Pros and cons में points लिखो, points को headings दो. So this is a good way to present your answer structured way. So बहुत ज़्यादा loosely structured नहीं था ये answer but it will give you a very good aspect of how you should present your answer. Now moving further. Again, a 15 marker. What is the principle? Describe the principles. So describe करना है वो classical conditioning है. Application बतानी है real life में. See, हर type की learning का real life implication you should know because UPSC again and again ask for real life implications or applications. So whenever you make notes, you should write down these are the real life implications. या तो आपके पास कोई empirical research evidence हो या anything else you have, you should make it. After that, start with Pavlov, classical conditioning and Amativity. He is the first person to be mentioned. Then define it what is classical conditioning. कि आप कैसे associate होता है veto stimuli with the stimuli. Then you should tell the process. ये different ये process है पूरा. Statement with a good diagram, simple one. So you should draw it. In the principle, what is neutral stimuli, unconditioned stimuli, unconditional response, sub conditioned stimulus, or any technical word you explain it.
acquisition क्या है, extinction क्या है. You should make this graph which includes your acquisition, extinction, spontaneous recovery, and extinction again. So this is a very good graph you should make when explaining the what is generalization and discrimination. Then coming to the application part. So in application, what is the emotional response, negative responses and positive दोनों aspect emotions के advertisement में क्या है, addiction में क्या है, psychotherapy में क्या है, what is the application in hunger, what is in PTSD, then पास्ट से कुछ चीज़ें कैसे एसोसिएट करते हैं हम, स्कूल में कैसे यूज होती है, कंडीशनल ड्रग रिस्पॉन्स में क्या है, और एट द एंड यू यूज अ गुड एप्लीकेशन मोर रियलिस्टिक इम्पैक्ट. फॉर एग्जांपल टीचर्स को कैसे यूज करना चाहिए पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को, जिससे कि ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, स्पेशली एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल. In this way, you applied your knowledge to solve a problem, real life problem or administration problem. Because we all know कि अपना gross enrollment ratio primary level under 100% है. उसके बाद sharp drop out होता है. So you should utilize your knowledge in this fashion कि आप अपने concepts को use कर पा रहे हो, psychology concepts को. Not only here, when you are going to give these kind of answer in the personality test of UPSC, you will get great marks. Okay, moving. Hope you understood the demand of the question and how to approach it. Then the next answer. It's a 15 marker. Any sort of learning takes place with the help of suitable association means classical conditioning. Reinforcement is operant conditioning. उससे पॉसिबल है. इस चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करो. सो क्रिटिकल व्हाट इज एग्जामिन? एग्जामिन मीन्स कोई चीज आपके सामने है, वो कितनी सही और कितनी गलत है. एग्जाम का मतलब यही होता है कि हाउ मच यू नो, हमने कितना सही सीखा और कितना नहीं सीखा. तो एग्जामिनर का काम होता है या इवेलुएटर का काम होता है क्रिटिकली एग्जामिन, तो सी द बोथ साइड्स. और कॉग्निटिविस्ट, गेस्टाल्टिस्ट और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट कितना एग्री करते हैं स्टेटमेंट से. सो हम प्रीफेस देंगे. इंट्रोडक्शन में प्रीफेस देने का मतलब ये दोनों टाइप की लर्निंग से कहाँ से आई थी. जो टिपिकल बिहेवियर्स थे, एसआर मॉडल था, एसएस और एसआर मॉडल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस स्टिमुलस से हम अपना लर्निंग या बिहेवियरल आउटकम आती थी. देन ऑर्गेनाइज्म जो ओ एस्पेक्ट है वो मिसिंग था कि ऑर्गेनिज्म ऐसा कुछ नहीं है, एनवायरनमेंट डिटरमाइन कर रहा है वो कैसे सीख रहा है, कैसे नई नए रिस्पॉन्सेज को लर्न कर रहा है. कॉग्निटिविस्ट एंड गेस्टाल्टिस्ट ने इस पे कंसर्न रेज किया. कौन कौन थे? टॉलर्स, चिम्था, टॉलमैन. इसमें यू शुड कीप मेंशनिंग द कीवर्ड्स. व्हाट इज द लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग. रॉबर्ट रेस्कोला की जो एक्सपेक्टेंसी एस्पेक्ट था, लॉवी बॉल ने भी एक्सपेक्टेंसी के बाद बोला था. लेटेंट लर्निंग का भी एस्पेक्ट है टॉलमैन का. तो 4-5 एस्पेक्ट यू शुड मेंशन रिगार्डिंग गेस्टाल्टिस्ट एंड कॉग्निटिविस्ट. और फिर इसको कंक्लूड कर लेंगे. जो कॉग्निटिव सेल्फ इवैल्यूएशन है लाइक प्राइड एंड शेम, वो भी तो एज अ रीइंफोर्सर काम करती हैं. बिकॉज इफ यू गो बाय द अदर नीड्स ऑफ मैस्लो हायरार्की, they also act as a reinforcer or as a reward for human behavior. Then coming to evolutionary psychologist, सबसे पहले तो they talked about the constraint क्या 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 है. तो we know that to learn taste aversion से जो जॉन गार्सिया का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बताया था कुछ ऐसे नेचुरल बिहेवियर्स टेंडेंसीज होती हैं कि वो सिंगल ट्रायल लर्निंग होती है. इन विद सिंगल ट्रायल वी लर्न दैट दिस फूड इज नॉट गुड एंड दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. सो दिस इज द biological bottleneck in the association and reinforcement driven learning. उसके बाद सेलिगमैन साहब का भी कहना था कि प्रिपेयर्डनेस का जो कंसेप्ट दिया था उन्होंने कि इवोल्यूशन से animals are biologically predisposed to learn some associations more easily than others. For example, fear from a snake. That is, we are naturally wired to fear from snake because we know as soon as the snake comes, we have to run to leave the place because otherwise it can harm us. And the third by brilliance is instinctive drift. जो raccoons का
हैंड वॉशिंग बिहेवियर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव वायरिंग जो चेंज नहीं हो सकती, हम कैसे भी उसको. सो कंक्लूजन, I left it knowingly, but how we could say that not only it is association or reinforcement, but also our expectations, our expectations, biological preparedness, observation. So you just need to summarize all the other aspects responsible for learning. You just conclude it summarizing that are responsible for acquiring new behaviors. Now moving to the next question. This question is about the application of classical conditioning and operant conditioning, means Pre-Max principle. The first demand of this question is कि आपको उसकी statement ढंग से पढ़नी है and you come to know the theme. What is the theme or context? That is Pre-Max principle. And the second part is describe the types of reinforcement. So starting with the Pre-Max principle, just explain the concept. What is that? इसको ग्रामर रूल भी कहते हैं. Pre-Max principle होता क्या है कि एक हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर को लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, एंड दैट हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर विल एक्ट एज a reinforcer to the low frequency behavior. So it make you learn things which we don't want to. The grandmas को बहुत यूज करती है बच्चों के साथ कि तुम do your homework, then you're allowed to watch TV type of thing is this. Then it is supported by Allen and Ivata regarding the development disabilities. Welch, Bernstein की study है. Performance are meeting the standards, then you are giving the place postings you want. So you can utilize it in work psychology also. See, this is the utility aspect. एक रिसर्च स्टडी को आप कहाँ कहाँ यूज कर पा रहे हो, that is the beauty. When you champion this trait, you will qualify UPSC easily because आपको then you need to study less and you can produce more. Same here in education psychology. Brenda Giger studies the 7th और 8th के स्टूडेंट्स पे उनके प्ले ग्राउंड टाइम को reinforce कराया लर्निंग से, जो लर्निंग आउटकम्स थी वो बढ़ गई, डिसिप्लिन बढ़ गया. So these are the issues. Now coming to the importance aspect, why it is important. Free will को ले आता है, choice of preference को ले आता है. And there are limitations also कि context specific होता है. For example, students were not feeling well or tired, they don't want to go to the playground, and you force them to go to playground. So this is the, and second is the contingency का aspect भी, low frequency behavior और high frequency behavior किस रेट पे दूसरे पे contingent है या नहीं है. And now you can conclude this part with that it has opened the new paradigms, like free will वाला concept ले आए, expectancy ले आए, reward expectancy जो उसका aspect था. So you can conclude with the new aspect introduced by Pre-Max principle in the study of learning. So see, the aspect which we should recognize is the structure. We support it. When we give the why it is important, what are the limitations, and then we concluded it. And then how far do you agree? So in giving the explanation, we determine everything. Importance क्या है, limitations क्या है कि up to this extent we agree, but there are some limitations to it. And the second part is types of reinforcement. So starting it regarding behavior is governed by the consequences. The
key pillar to operant conditioning. Then we define the different types, what is positive reinforcement, what is negative reinforcement. Then you can make a 2 by 2 matrix or a table. What is positive? Where positive means adding, and negative means removing or avoiding. This is the main thing you need to know for the conceptual clarity. Then you explain what is reinforcement, what is punishment with examples. That is very necessary in whole psychology. Give examples only, then you will be able to tell the evaluator that you know this concept because you are explaining it with the real life examples. And by the in conclusion, give some application. Here, pandemic preventive behavior. Simple. This is my thought. You can apply it in n number of areas or domains. Now moving to the next question. Show your acquaintance with cognitive approach to classical conditioning and describe how classical conditioning principles used to solve everyday problem. तो we have to tell कि cognitive approach क्या है और उसको हम और classical conditioning को everyday में कैसे use कर सकते हैं. तो 20 mark का question था, तो we have to explain things in a bit elaborative manner, briefly नहीं करना. तो starting define किया होती क्या है, associate करते हैं दो different stimuli को, then we describe the Pavlovian experiment. Then the diagram is there. What is it before learning, during learning, and after learning? Then coming to the cognitive aspect in classical conditioning. First, that Robert Rescorla's expectancy model. There is an expectancy towards a particular reward. Then there's a counter review. कि सिर्फ बेल से ही क्यों desired behavior आ रहा था? Why not with the light? Just because there was an expectation, and that is the pairing of the tone and food. And we are highly adaptive and focused toward that only. Otherwise, there are n number of stimuli present with the food. उनके साथ association नहीं होती है. Then second aspect is the blocking. कि noise भी है, light भी है, shock भी है. So we block the rest of sensation of other stimuli and allow that which is paired, which is desirably paired with the unconditioned stimuli. So it is a blocking by one stimulus to the other stimuli. Lowy bond also reaffirm the expectancy model. Now coming to the everyday problem. See, these names are very important. That Lowy and Robert Rescorla. If you don't write these names and their researches, you will get less marks. So please always make a small, for example, combination in classical condition. There's 3 points. First is expectancy model, Rescorla. And then blocking. Then Lowy bond. These are the short notes you need to make, and only these aspects, only these short smart notes will be revised just before the exam. You need to make this kind of notes just before which are revisable before the exam. So this crispness you need to bring. Now coming to everyday problem. We all know about the phobias and anxiety due to this, so we use that exposure therapy से फिर हम flooding, implosive therapy we use to solve the phobias and anxiety related problems. Attraction and aversion इससे होता है. We all know regarding aversion. So we can use this aversion and these kind of these kind of principles in reducing man and wild animals conflict, because in the especially in the national parks or wildlife sanctuaries,
when, especially in the outermost regions, there's a huge conflict areas, big conflict area जहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी के पैडी फील्ड में एलिफेंट्स घुस आए हैं या फिर किसी के किसी के शिपयार्ड है, किसी के कैटल यार्ड में कोई कार्निवोल घुसा है. So there we put some flesh and coated with some kind of chemical जो उसके खाते ही उसको vomit हो जाए, and he will automatically condition that not to come here, because here whenever I taste a meat it will produce nauseatic feeling. So this kind of conditioning for the animal can be done. If you write these kind of application, you will definitely get great marks. And sickness and health में, allergic reactions में, you just read it, you will come to know. I'm not going to read line by line. Anticipatory, nauseating and vomiting. Immune system में भी कहीं ना कहीं इसका uses, and I mentioned all the studies which are relevant here. Just please read them. Drug dependency में, because see, if that high which attained after consuming a drug, उसमें पैराफर्नैलिया इफेक्ट भी होता है. If you are with your friends in a pub bar, तो कई बार क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो they utilize this paraphernalia effect by giving placebo to the addict and just providing this kind of paraphernalia. By that, so drug dependency with time reduce होती है, because you keep on giving him placebo and his body started adopting with the withdrawal symptoms, and by the proper therapy session the dependency can be reduced. In classroom also anxiety or fear कम करने के लिए. And in conclusion, you should give an application which is more relevant to administration. For example, behavioral therapies. We use behavioral therapies to change the negative behaviors. So we can utilize this kind of therapies. Means we can utilize in therapies in a number of ways. For example, drug dependency. You can relate it with the NHRC drug data. So we should inculcate it to reduce the number of addicts in the country or in your district, wherever you are posted. So this kind of application outlook, which solves the administration problems, will definitely give you better marks if you conclude in this manner. Now coming to the next question, what distinguish between negative reinforcement and punishment? It's a bit conceptual question. Do you think punishment is an effective way to modify behavior? It is also a very good question. So starting with key positive, negative reinforcement punishments are the part of operant conditioning. Then what is punishment? We just simply explain what is the positive punishment, what is negative punishment, उसको response cost भी बोलते हैं. You just simply draw a flow chart. Then what is negative reinforcement? Again a flow chart for that, just to explain the concept. What are the characteristics of punishment and reinforcement? So you just simply put that. Then again for the negative reinforcement, then give examples. I'm again telling you these model answers are not following word limit, just to help you understand the concepts and just to help you understand the structure. You need to define first, then explain the concept, then give examples. So these are the ways to approach any answer in UPSC examination. So this is by explaining. Then coming to the second aspect, is punishment an effective way to modify behavior? So इसमें कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने काफी काम किया. वन इज एलिजाबेथ बेस्चॉफ. 2002 में उन्होंने 88 स्टडीज के अराउंड मेटा एनालिसिस किया. उन्होंने ये पाया कि 3 में से 5 स्टडीज इनकंसिस्टेंट है. उनके आउटकम्स जो है कि अनफेवरेबल एसोसिएशन है चाइल्ड की कॉर्पोरल पनिशमेंट के साथ. तो उन्होंने ये बताया कि हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. दीज आर द नेगेटिव पेरेंट रिलेशन में इशू हो जाता है, पुअर मेंटल हेल्थ होती है, फिजिकल अब्यूज के रिस्क बढ़ जाते हैं. और देन अगेन गर्शोव ने एम्फसाइज किया इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल पूरी खराब होती है. केस स्टडी देखी, स्वीडन में कॉर्पोरल पनिशमेंट पूरी तरह बैन हो गई. इसका मतलब ये नहीं कि स्वीडन पूरी तरह से अनरूली और अनसोशलाइज हो गया.
उसकी उनकी मेटा एनालिसिस में हमें निकल जाता कि we should not use the rod, we should spare the rod, but mild and moderate spanking can be taken, and it should be immediate. It should be, if possible, up to level harsh, use का impact हो. It should be followed by positive reinforcement. तो ये तीनों एस्पेक्ट मिलके आपके पनिशमेंट के शेड्यूल को कंप्लीट करते हैं. So by this you need to, ये Bomberan साहब ने बोला था कि it's a backup technique, mild to moderate, to discipline, if because sometimes children may get into this self-destruction behavior. कोई बच्चा बार बार सर मारे जा रहा है किसी दीवार में because he or she is not listening. So at the end we have to use the punishment as a tool to prevent this kind of behavior. Now moving next, how would you apply toilet training for 3-year-old? Very applied question. इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना एंड स्ट्रक्चर करना एक चैलेंज होगा, ना कि उसका कंटेंट. तो स्टार्टिंग प्रेजेंट करेंगे हम कि डेवलपमेंटल टास्क है टॉयलेट ट्रेनिंग. मैच्योरेशन का भी एस्पेक्ट है कि बच्चा पैदा होते ही यू कांट train him or her because with maturation, or usually it's around 27 months or 18 months के बीच का टाइम होता है जब we should start doing it. एजरिन फॉक्स का एक मॉडल है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, मैंने उसकी हेल्प ली है इस आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट टू स्ट्रक्चर इट. जरूरी नहीं है यू नीड नॉट टू यूज इट, बट जस्ट टू स्ट्रक्चर कि what are the equipments required, what is the method used, प्रोवाइड इमीडिएट रीइंफोर्समेंट कब दें, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए कि मतलब बच्चा इज नॉट फॉलोइंग द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्सपेक्टेड रूल्स एंड गाइडलाइंस, तो उस केस में हाउ टू अप्रोच. एंड देन ब्रैकेट में जब भी आप यू आर एक्सप्लेनिंग कि बाय दिस मेथड यू आर डूइंग इट, ब्रैकेट कीप राइटिंग द प्रिंसिपल यूज्ड कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन कैसे हो रही है, डिस्क्रिमिनेट कैसे हो रहा है, शेपिंग चेंजिंग कहाँ यूज हो रही है, एग्जाम्पल. और मतलब पॉटी सीट पे या पॉटी चेयर पे उसको आप बार बार लेके जा रहे हैं, रिवार्ड कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, ट्रीट दे रहे हैं, तो हाउ स्टेप बाय स्टेप यू आर शेपिंग और चेंजिंग द होल प्रोसेस. और फिर उसके आगे पार्शियल रीइंफोर्समेंट और वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, लाइक प्रेज कैसे यूज कर रहे हैं. सो if you थोड़ा सा और सोचे तो you can make a flow chart also, कौन कौन से प्रिंसिपल्स आप यूज कर रहे हैं. So in that case shaping and chaining यूज कर रहे हैं, partial shaping and chaining, and stimulus generalization and reinforcements, then vicarious reinforcement and partial reinforcement, और in between variable schedules होने चाहिए कि initially हर हर step को आपने रिवार्ड किया and then you start missing some steps, then the reinforcement from materialistic to the vicarious one. और add on you should, because 15 mark और 20 mark में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो you should put some की कुछ complications भी हैं, stool paraplegia, stool with holding or hindering during defecation, so you take some medical help or medical expert help in that. And in the end there's a recommendation by APP, we should not force कि एकदम से अपने बच्चों को force कर दे, let him come his or her age. And another good way to conclude this is integrating the topics. See, integration is the key to good marks. So we all know कि Erickson's के stages हैं, तो इस stage में trust develop होता है. So by proper toilet training we also establishing the trust in the toddler. So if you mention these keywords, Erickson, trust, toilet, so you will get +1. So I always focus most in conclusion because it shows your analytical abilities. And going by the primacy and recency effect, and then conclusion is there and you're writing great words here, definitely it will give a positive impact to the evaluator. Moving the next question,
पॉजिटिव reinforcement, नेगेटिव reinforcement और punishment में डिफरेंशिएट करो. और सीट बेल्ट्स अगेन अप्लाइड एस्पेक्ट कि इन सभी प्रिंसिपल्स को आप कैसे यूज करोगे सीट बेल्ट बिहेवियर को एनफोर्स करने में. So simply, this is again repetitive, so I'm not going to read it. What is positive, what is negative, what is this explained, then examples are there. This is important because जब भी applied question होता है ना, तो there is a issue of structuring it. How to structure it. So my way, because हर प्रिंसिपल के कुछ प्रोज एंड कॉन्स और कैसे यूटिलाइज करना है, उसके क्या चेक्स हैं, क्या अप्रोचेस हैं. सो I simply, for every principle, I have 4 ways to approach it. One is how to use it, कि पॉजिटिव होता क्या है, कि अवार्ड करना सेव ड्राइवर्स को लाइक गिफ्ट कार्ड, चलान नहीं कटा और टिकट अगेंस्ट ड्राइवर में गेट सम रिवॉर्ड्स, कि 1 साल से कोई चलान नहीं आया तो उसको कुछ अवार्ड दे सकते हैं, लाइक ऑटो अपडेटिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की, उसको आरटीओ जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट ना करना पड़े. इफेक्टिवनेस क्या है कि हर पॉजिटिव ड्राइवर मीन्स जिसका चलान नहीं हो 1 साल से, तो उस तक रीच आउट करना मुश्किल है. इट्स एन इंटेंसिव प्रोसेस. पोस्ट क्या है, ये रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट का. टाइम टू इम्प्लीमेंट, टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि हर तक आउटरीच पहुंचाना कि भाई ओके यू आर अ गुड ड्राइवर, टेक योर रिवॉर्ड. तो इट्स डिफिकल्ट स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया. सो इट गिव अ pragmatic approach, and you have to be pragmatic being an administrator. Now moving further, negative reinforcement के aspect में how do you use कि ergonomics level पे कि वो annoying buzzer होता है जब सीट बेल्ट नहीं लगाते, that is very good. दूसरी buzzer को remove करने पर effective है because जब तक उसको पहनोगे नहीं, click नहीं करोगे सीट बेल्ट को unless that keep on buzzing, and it's very annoying, we all know. Issue क्या है कि भाई manufacturers पर थोड़ा सा additional cost आएगा, time to implement कि it is implementable, so it's a good way. इसका फिर yeah, so actually it should be here, which I mentioned. This is a US case study. This is a typo error. Then positive reinforcement effectiveness may be putting positive reinforcement, positive punishment means putting fines, raising tickets or challans against the offenders. यूएससी की स्टडी थी कि वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही है जहाँ पर हम वी आर पुटिंग फाइन्स. इशू क्या है कि एनफोर्समेंट का इशू हो सकता है बिकॉज वी नीड द फोर्स फॉर दैट. टाइम रेगुलरिटी इन टर्म्स ऑफ मतलब वी हैव टू बी रेगुलर, की ऐसा नहीं कि साल में एक ही महीने में ही हमने अपने चालान पूरे करने थे. So we just put on enforcement drive for a month only. It should be a regular basis. It should be on a regular basis. Then the negative punishment कि cancel कर दे ड्राइविंग लाइसेंस कि हमने कोई privilege छीन ली. That is negative punishment. Effectiveness कि behavior correction में it's fine. Cost क्या है कि compliance है drivers पे और enforcement burden तो है ही. और rule changes करने में कि भाई instead of putting fine we are just cancelling the driving license. So we need to change the motor vehicle laws and all. Conclusion again, the administration का कोई solution का perspective देते हुए किसी numerous death होती है इन roads पे, और better if we have NHRC data for that, you can conclude that we should choose these techniques or strategies for it should be strict, judiciously, and appropriate schedule and reinforcement के साथ करना चाहिए. These are the 3-4 keywords which should be there in your conclusion. Then moving further, what is vicarious learning? Discuss its implication, acquisition of emotional see application everywhere they want to apply the concept learned in learning chapter. So if you are not able to apply your concepts or you are not putting those examples in your answers, so that is very difficult. Now again I defined 15 marks से क्वेश्चन आप डिफाइन करो. Contextual intro, teacher parent what is, कैसे यूज करते हैं मॉडलिंग स्किल्स को, फेल्प्स ने बोला है. और ये हाईली अडेप्टिव भी है, फिर व्हाट मॉडलिंग है उसको एक्सप्लेन कर दिया. देन पंडुला की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, 4 steps, you all know that. What is self efficacy, then pro social models, positive
मैंने बात करी. Then coming to applications for the emotional. सबसे पहले तो Little Albert study Watson की. That is the first one. Then what Rashman also did that. And Cook et al. की है. Garol et al. Field et al. So these are 4 5 different empirical evidences, which is which is the demand of this question. So we have to write that. So we just read that very simple English. But the समझ में आ जाएगा तो I'm not reading it. You can just conclude that the viable pathway through which cognitive and behavioral component of emotion development. Then coming to the last question, last or second last, I think. Discrimination and generalization, two complementary processes of skill learning. Discuss with reference to operant condition 2019 का question है. The last time I appeared for UPSC mains, so I draw this diagram there also. It's yeah. So define करेंगे skill क्या है, what is operant generalization, what is operant discrimination, and based on the Fitts theory, Fitts and Posner की theory है जो है, उसमें हम जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन को हर स्टेप पे डालते चलेंगे कि कॉग्निटिव स्टेज पे व्हाट इज दैट, कि हम जनरलाइज करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, एसोसिएटिव स्टेज पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं सेंसरी इनपुट्स को, ऑटोमेटेड पे फ्लॉलेस जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन फ्लॉलेस हो जाता है. और एग्जांपल किसका लेंगे, लर्निंग कीबोर्ड टाइपिंग का. सो दिस वे एग्जांपल इज नेसेसरी जो कि आपके मार्क्स को एनहांस करेगा. और कंक्लूजन में परफॉर्मेंस प्लेटू से कैसे निकलेंगे, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन जो डॉक की और स्मार्ट गोल ओरिएंटेशन, जिससे कि हम अपनी जो स्किल लर्निंग का प्रोसेस है उसको स्मूथ कर लेंगे और स्ट्रेंथन कर लेंगे. एंड एट दैट स्किल इंडिया जो अपना मिशन है उसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. जस्ट नीड टू मेंशन द स्किल इंडिया. इट विल गिव यू another level of diversity in your answer. Now moving further, how can parents use reinforcement contingencies to manage aggressive behavior? 10 mark है. Pandu and the other तो different है shaping में. तो bracket में सी I was always writing कि कैसे behavior target कौन सा hitting अदर और दूसरे बच्चों पे hitting behavior है तो उस पे कैसे कैसे करते चलेंगे. In bracket I mentioned the whole process, every aggression every. So in bracket you are explaining the concept you mentioned in the point wise. So this is again for 20 marks. 10 marks में आप इनमें से 2-3 लिख लेना. That is sufficient. What is token economies? I'm not going to tell what is token economies. How you so that this contingency contracting कि किसी भी behavior को strength करना तो you have a contract with the kid की अगर अगले आधे घंटे तक you behaved in the desired manner, you will get the consequent reinforcement. So that is a kind of contracting. Time out, response, cost. See, this is the most effective ones in aggressive behavior. Or conclusion में you can give a question. To be cautious while implementing. It should be systematic. अगर systematic नहीं होगा तो there should be issues in getting the desired results from these contingencies. Then that's all for this learning chapter. I hope there's a new kind of insight developed. And I request to please give feedback regarding this program, PYQs, regarding model answers, regarding these lectures. Please feel free to give feedback. This is the only way I can improve myself and I can enhance your experience or enhance your knowledge base in psychology optional. So, right now, thank you.